So students, continuing with chapter 10 straight lines, I am here again with some new concepts. So we are today studying general equation of a straight line. The equation is given by ax plus by plus c is equals to 0. In the earlier classes we have studied 5 forms of representing a straight line, but this general equation can be represented in only 2-3 forms. One among them is slope intercept form. So how to represent it in slope intercept form, although I have told you about it in the earlier videos also, but let us try to understand slope intercept form में कैसे लिखना है. So all must be knowing slope intercept form क्या होती है, y is equals to mx plus c, correct. तो हमें इस जनरल इक्वेशन को y is equals to mx plus c की फॉर्म में लिखना है. So what we will do, by is equals to minus ax plus minus c and y is equals to minus a upon b x minus c upon b. This c is a small c, so don't confuse this with c. So this is the slope of this particular line and this is the intercept, y intercept of this particular line. Okay, in the examples also we have seen it, correct. Now the second one is double intercept form. How to put it in double intercept form? Actually we will be representing it, तो ऐसे तो नहीं करेंगे. We will do it in the form which I have told you earlier. So in double intercept form what we will do? As we all know, it is x upon a plus y upon b is equals to 1 होता है, correct. और ये 1 बनाना जरूरी है. So हम क्या करेंगे, ax plus by is equals to minus c, or it may be c also, जैसा भी होगा. What we will do, we will make 1 over here, and how it can be done, जब हम इसको minus c से दोनों तरफ divide कर देंगे, correct. कर दिया. Now how it is, x upon a की वैल्यू यानी कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई है प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी, ये हो गया y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट. इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना हमारे लिए इजी है. आई हैव शोन यू इन द अर्लियर एग्जांपल्स आल्सो रिलेटेड टू दिस, बट द थर्ड वन इज नॉर्मल फॉर्म. So we all know what normal form is. Normal form होती है x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. So instead of taking ax plus by is equals to c, let me take directly one example from the book only. It's example 14, which says we have to reduce the equation root 3x plus y minus 8 is equals to 0 in normal form. इसको normal form में represent करना है, correct. अब normal form में represent करने के लिए first of all what we have to do, we have to keep x and y over here variables and the constant over here. Please make sure that it is always positive. क्यों positive होना चाहिए, क्योंकि ये p को represent करता है and p is the distance which we know is of the perpendicular drawn from the origin on the given line. So this has to be positive. नहीं हो, मान लो ये negative आता है, so change all the signs to make it negative. Now there is one thing which I will tell you किया क्या है, लेकिन actually करने में it will be easy. So what we are doing is we will divide the equation by the sum of squares, under root of sum of squares of coefficients of x and y. सुनने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, इससे डिवाइड करना अपने को. और ये क्या है, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2 होता है. सो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई. सिंपल टर्म्स में वैसे इसका स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट है 1, इनके स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, और ये हो गया √3x/2 प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 8/2.
So basically it becomes root 3 by 2x plus 1 by 2y is equals to 4. And when you will compare this equation with x cos alpha plus y sin alpha is equals to p से compare करेंगे, so what you will do, what you will get, p की वैल्यू तो 4 आ गई, ये तो फिक्स्ड है परपेंडिकुलर, cos अल्फा आ रहा है हमारे पास रूट 3 by 2 और sin अल्फा आ रहा है 1 by 2 and this is one and same thing, that means अल्फा की वैल्यू all of us know 60 degree or you can say pi by 3. So we have got the value of alpha as well as p. इसको normal form x cos alpha plus y sin alpha is equals to p में रख देते हैं. Therefore normal form of the equation will be x cos pi by 3 plus y sin pi by 3 is equals to p की वैल्यू है 4 and when you will solve it आपको original equation मिल जाएगी. So this is how you can represent a general equation in all these three forms. Now let us see distance of a point from a given line. So line given है हमें ax plus by plus c is equals to 0 and the point given is x1 y1 which is a. So in the diagram we have seen that we are supposed to find the distance of this particular point A from this particular line, and this distance we can call it as small d. Okay, so the distance formula for this is d is equals to ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square. The important thing over here is that this distance has to be positive, तो इस पे हम मॉड्यूलस लगा देंगे क्योंकि distance can never be negative. Now let us take example 18 on page 227 which says we have to find the distance of point 3 comma minus 5 from the given line 3x minus 4y minus 26 is equals to 0. Okay, so this we have represented by d. Now the values of x1 y1 are 3 comma minus 5 and a and b and c are given here. So value of d will be 3 into 3 minus 4 into minus 5 minus 26 upon root 3 square plus minus 4 square, root a square plus b square. We have put a modulus sign, negative आए तो positive लेना, positive आए तो positive रखेंगे. So it becomes, by solving it becomes 3 by 5 units, root 9 by 9 plus 16 is 5. We'll write d की value 3 by 5 units आ गई which is positive over here. Now we will find the distance between parallel lines. Two parallel lines will be given और उनके बीच का distance हमें पूछा जाएगा. So here lines given are ax plus by plus c1 is equals to 0 and ax plus by plus c2 is equals to 0. How do we know parallel lines हैं? Their slopes will be equal. Parallel lines के slope equal होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप slope निकालेंगे तो ये coefficients दोनों same होंगे और you can say इनका ratio b upon a का ratio same होगा, तो ये lines parallel होंगी, सिर्फ c1 c2 constant में ही difference होगा. So if a line is 2x plus 4y plus 8 is equals to 0 और एक line है 4x plus 8y plus 17 is equals to 0, so दोनों में ratio same होगा, that I'll tell you later on. But here I have represented और इनके बीच का distance निकालना है d, तो एक point लेना पड़ेगा hypothetical और सबसे बढ़िया point होता है origin. So origin से distance निकाल लो दोनों का, d1 आ जाएगा line l1 का distance, d2 आ जाएगा line l2 का distance और दोनों का difference हमारे पास d होगा. So what will be d1? It will be a into 0 plus b into 0 plus c1 upon root a square plus b square. And what about d2? It will be also the same, almost a into 0 plus b into 0 plus c2 upon root a square plus b square. ठीक है ना? So d will be d1 minus d2, d1 minus d2. So that will be basically
C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। और ये हमें देखना होगा कि C1 और C2 की वैल्यू कैसी है। अगर नेगेटिव होगी तो अभी आपको पता लग जाएगा, दोनों ऐड हो जाते हैं, और पॉजिटिव सेम साइन होंगे तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। सो लेट अस टेक एग्जांपल 19 over here to understand the concept properly. It's again on page 227. We are being asked to find the distance between parallel lines 3x minus 4y plus 7 is equals to 0, and other line is 3x minus 4y plus 8 is equals to 0. ठीक है। Since we know that these two are parallel lines, slopes same है, ठीक है ना, slopes are same of both the lines, that is why they are parallel, ठीक है। और हमें डिस्टेंस पता करना है, तो हम क्या करें, d is equals to d1 minus d2 होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं c1 minus c2 upon under root a square plus b square. So what is the value of c1 over here? a की वैल्यू सबको पता है 3 है, b की वैल्यू सबको पता है -4 है, c1 की वैल्यू 7 है, c2 की वैल्यू 8 है. So we will put the values, and if it is negative तो हम इनको मॉडुलस में डाल देंगे. Okay, so we are putting a modulus sign over here. ऊपर भी ऐसा मत समझना मॉडुलस नहीं है, यहाँ पर भी c1 और c2 के बीच में मॉडुलस ही रहेगा. अगर दोनों के बीच का डिफरेंस नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे. 7 minus 8 upon root a square is 3 square, b square is -4 का स्क्वायर, करेक्ट. ये होगा जी 1/5 यूनिट्स. ओके, डन. अब एक चीज है, मान लीजिए c1 की वैल्यू होती 7 और c2 की वैल्यू होती -8, तब आंसर क्या आता? तब द आंसर वुड हैव बीन c1 minus c2 upon under root a square plus b square. This is we are presuming, मॉडुलस लगा देंगे और यहाँ पे होगा 15/5 मतलब 3 यूनिट्स. Now what does c1 और c2 के नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट? इसका मतलब होता है one of the lines is on one side of origin and other line is on the other side of the origin. So इनके बीच का डिस्टेंस बजाय डिफरेंस होने के ऐड हो जाता है. So if c1 and c2 have different signs, opposite signs, it basically means they are on the opposite sides of the given point which we have considered. If both of them are negative, that means they are on one side. Both of them are positive, they are on the same side. But if they have opposite signs, it basically means that they are on the opposite sides of the given point. Okay, one more thing which I would like to stress upon is ये ax plus by plus c is equals to 0 दे रखा है. Value of a is 3, value of b is -4 and value of c is 7. Had it been the value of a as line as 6x minus 8y plus 19 is equals to 0, a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू -8 हो गई. Are these two lines parallel to each other? Yes, they are parallel to each other, and the reason for that is the ratio of b and a in both the lines are same. आप चाहें तो दोनों लाइंस को y is equals to mx plus c की फॉर्म में डाल. The slope in both the cases will be same. So it is not necessary कि 3x minus 4y a1 b1 और यहाँ a2 b2 इनकी वैल्यू सेम हो. इनका रेशो b अपॉन a का रेशो इधर और b अपॉन a का रेशो इधर सेम होना चाहिए. दैट मीन्स ये इनके प्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं. सो दूसरा इक्वेशन इंस्टेड ऑफ 3x minus 4y plus 8 is equals to 0 की जगह 6x minus 8y plus 19 is equals to 0 भी होगा, तो भी ये पैरेलल होंगी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ distance of a point from a line and distance between two parallel lines. Okay, now what you can do is you can revise the concept, solve the questions, do the examples properly, ask your problems. Thank you. Stay home, stay safe, have a good day.